strikers for the sixth T20I of the seven-match series between Pakistan and England. The Bank Kalfala presents a news series. Taste just to free your thirst. How the ice taste so cold. Better be sure to give it winning when we love it. Pepsi. Whole living always loving Pepsi. Whole living always loving Pepsi. Pepsi. जीने तो लगेंगे घर भर के जब कपड़े धुलेंगे Best ever formula. गहराई से मैं ब्राइटनेस सब राइट कर दिया लेकिन आपकी डाइट ने सब टाइट कर दिया Free doctor! Free doctor! Free doctor! Life boy, I am free doctor! Free doctor? Entrusted with the ball that final over, and did he do a fine job indeed? Now let's visit that final over. Wide Yorkers bowled to perfection to one of the greatest T20 strikers. He landed one in the slot which was hit away for six and was back on radar then after. Managed defender, not a very big ask in the final over, getting Pakistan over the line. Rizwan once again the hero with the bat. Pakistan's lone soldier batting all the way through, amassing plenty of runs in this series, and he played his shots as he does always. With another half century to his name, he has amassed a lot of runs in this bilateral series and is topping the charts with 315. Not anyone close to him. Babar next in 192, Brook 190, Babar 194, Brook 192, and Duckett and Moeen Ali in there as well. Haris Rauf has been a star former with the ball for Pakistan. He's done that on multiple occasions, putting at the death never easy. Brilliant with his Yorkers, and the slow ones that he disguises excellently. He's rattled the stumps on plenty of occasions, and he's done that a number of times. He is indeed the leader. In the wickets, he has in the defending Pakistan's pass score. The crowds in the numbers again, once again. We've heard they are sold out crowds. They were loud in the first match. And alongside me, of course, I've got Naseem Akram and Badal Khan. Good evening, Assalamualaikum everyone. What a day. Pack house around the stadium, the traffic is clogged, people are queuing up, and most importantly, Pakistan 3-2 up, was it? Yeah, you talk about the traffic. I believe you were stuck in there for quite a while. Yeah, 2 hours to be exact. Only. Yeah, but long series, 7-match series, and people thinking, well, it's not long enough with the games that we've had. We've had sort of cliffhangers all the way through run chases, big run chases, and then the last couple have been just extraordinary games. Question here, by hand, David Cobb captains yourself. You've lost 2 games chasing.
but yet you still want to do this again. Well, if at first you don't succeed, try again. Let's face it, Moeen Ali will have got pretty much everything he wanted in terms of the bowling in these previous two matches, and very little in terms of the batting. He himself seemed to fall, which is a good sign for a captain at this time, so he can lead from the front. But he needs a bit of base, needs a bit of platform. So for England, it's getting dangerously close to the end of the series, obviously, so they need to win this game to even it up and give themselves a chance to take the series on Sunday. It's getting dangerously close to the World Cup, which is the next big event that follows for all these teams in Australia. And everyone wants answers to their best team. They want to know what their best team is, want to know who's in form. So I think it has to both Pakistan and England in the series. We've seen some brilliance, we've seen a lot of human error as well, which keeps things interesting. And of course, predicting what's going to happen in any of these games is impossible. We've seen big totals chased down, we've seen big totals easily defended, we've seen low totals defended twice now in a row. And, well, Pakistan, they're on a bit of a roll, and they're making 3 and 3, defending whatever they can. Here tonight, or will it be England's turn to make life interesting yet again in the series? I for the series win here is the best chance they had, Pakistan team. They're 3-2 up in this series. Alim Khan, one of the most experienced umpires in world cricket. Rashid Riaz, the other one. Rashid Riaz, standing in his 22nd T20 international. And yes, Pakistan should go for the kill, try to win the series now. England under pressure. And one thing Pakistan must have realized now that they can defend. Doesn't matter what the total is. That hits or that stats, that batting second 99%, their favourites, but Discussion with Rizwan not playing today, had that blow to the back as he was running the other day and was finding himself in between the fielder and the stump, so a blow to the back which achieved some today. So in comes Mohammad Harris for his first ever T20 international for Pakistan, cap number 99 in that format. Of course, with him will be the captain. So Rizwan has set high standards. Mohammad Harris, as we know, can be a very, quote, as it cast a few moments ago in our pre-show, can be a dynamic player. exciting player as well. I've seen his couple of innings in PSL. He was phenomenal. So I'm glad he's getting the chance to play for Pakistan, making his debut. Haris, and of course Rizwan is resting. He needed a rest for 1 or 2 games. He has been playing almost every game since the shutdown for Pakistan. So, restart to get things underway. Not quite in the way that he would have liked. A bit of swing, but it's always going to be down the leg side. So the first man involved in the action, Alinder. Yeah, the first thing you look at is swing, and yes, it swung, but it went down leg side, so probably will be happy that the ball is swinging. He just needs to correct that line. First couple of deliveries, left arm swinging the ball back in is dangerous in most forms of cricket. First run. Again, leg stumpish. This one just helped round on its way to deep square leg. So, first run on the board, off the bat. Big day for Haris, making his debut today with the skipper, Babar Azam. Back house, not yet, but there are huge queues outside the stadium to wait to get in. That's because you held him up with your current traffic, isn't it? I checked my car about 7 times, so I can imagine what average cricket lover must be going through. Well, that's four balls. Again, just that little bit of swing, full enough to give it a chance to swing. Just for a moment, the danger was that Mohammad Harris would overbalance there. Plenty of left armers in this team for England tonight. The background there, Sam Curran. Look at this swing in a little bit. Would have hit middle stump. हर किसी मैच देखने के लिए जरूर ज्वाइन करें।
before. Look at the late swing. And I think in the end, he played well as well. Haris, we know he can play shots all around the park. But early on with the new ball, just have a look and then play your game. Plenty of overs. A little ungainly, I'm afraid. Yeah, just play your game. Now, I know the great temptation in this game, this form of the game, whether it's over number 1 or over number 20, is to drag it to the leg side and see how far you can hit it. But that was a classic fast ball, a little bit wide of off stump, on the off, through extra cover, thank you very much. Could have been runs instead of that ungainly heave. That's what it was. It was an ungainly heave. It really was. But again, playing his first game, he must be under a bit of pressure. He got to get his balance right. Sorry. So, I'm just going to laugh and pass it across. As over to you. Lion match HD in Well, yeah, he wants to impose himself or wants to express himself, but there's other ways of doing this. Third and point and in the circle. So if he just had opened the face, he had a chance of getting boundary down to third man. Instead, he tries the more difficult option. Well, fine leg is in the circle, but even on the offside, behind square, all three fielders are in the circle. So that width outside off stump, he could easily just play the conventional square cut or just open the face slightly. And credit to the bowler. He saw him going across and he bowled his away swinger instead of the in swing to the right hander. So intelligent bowling, good over so far. Good slow ball as well. And actually, the correct response from Mohammed Harris. Well done. 2 without loss after. For starters, keep a look at the bowler, see what the pace he's bowling, what's the swing he's either is swinging or not. Swung a bit. Delicious new cornetto brownie के साथ तो बनाओ कॉलर्स पे दागों की दीवार, जमेगी धूल, मिट्टी। नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। Paces off the ball out of the hand with someone like David Willey anyway. I mean, it looks good. All these pitches look good. They're bare. The cracks are not a problem. But I think most important, David, they look dry as well to me. And that's why I think that's the reason that ball stops at times, especially early on. Another good delivery. Pakistan will be happy with the lack of pace. Wood's not playing, so quite a few batters would have side a relief.
इस मैच ऐप को डाउनलोड करें और देखें पूरा मैच बिल्कुल फ्री। तो भाई For starters, keep a look at the bowler, see what the pace he's bowling, what's the swing whether he's swinging or not. And we've seen the first over swung a bit. Yes, so David Willey, who's been around quite some years now, very experienced in terms of England's white ball cricket, has his ups and downs. especially with the pace like wood. और कौन सागर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। ऐसे जी नहीं, रिजवान नहीं है, गैंगस्टर जब ठीक है ब्रो। सलाम ज़हीर अब्बास। चले रिस्की रन लिया है बाबर आजम ने और तो 6 रन है स्कोर पाकिस्तान का तीसरे ओवर में। 10.6 के चाहूंगा मैं कि 14 के 14.5 के पिछले मैच का रिकॉर्ड था। कोई लिंक नहीं है, बस डिजिटल स्टार्स के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटल स्टार्स नाम भूलना ना भूलिएगा, डिजिटल स्टार्स भेजना ना भूलिएगा, जरूर भेजिएगा। बैन नहीं करना नहीं होगा। तारिक सिद्दीकी बाइक पिक सही नहीं आ रही है, जैसा भी है आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लाइव में देखा, असलन अब्बासी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए पहला शॉट मोहम्मद हारिस के बल्ले से, पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं और सीधे गेंद दी है 6 रन में। पहला छक्का हुआ, पहला छक्का मिलता हुआ पाकिस्तान को। प्लीज पूरा मैच रखना मेरे से जी, बिल्कुल पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं लाइव कवरेज देने की हमेशा कोशिश करता हूं और उम्मीद है कि आप जब पेज को फॉलो करेंगे, क्योंकि बीच में कभी टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैच रोकना पड़ता है, तो जब आप पेज को फॉलो करेंगे, जैसे पेज एक बार फिर लाइव आता है तो आप जरूर Kurumba open link lekar ko click করুন। I'm going to take it all back when I said I'd take it all back, because for the simple reason that was a much better shot. It was hit down the ground. He was a much better shot, a much better option than trying to manoeuvre it over third man before you've even looked at the ball. So that I'm happy with. I mean, this is okay. It's very much a T20 shot. Less risky, you mean? Early especially. I mean, it's a better area for him. And nothing wrong with that at all. Trying a test match. There's another question. Obviously, when you're looking at the bigger picture, the World Cup, you've got sort of 7 T20s here for Pakistan and then at least 4 in New Zealand and then those warm-up games as well in Australia. So is it a case, we talk about players being undercooked, is it a case where players are overcooked before the World Cup? You've got so many options, so many games. Probably mentally and physically tired too. I mean, 7 T20s are just too many. And then, like you said, 4 in New Zealand. And then 2 practice games. That a beautiful shot. There's a fielder there in middle it. Oh, straight to Adil Rashid. Gleason got the breakthrough for England. Well, guess what? A little over-ambition, that shorter ball, not timed. And this is what happens. All very well to have ambition in this game of cricket, in this form of cricket, but it got too close to him. Gleason's done well. लाइव में देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में सही रहेगी।
ग्रुप को ज्वाइन करें और लाइव मैच को फॉलो करें और मैच देखते रहें। हमारे ग्रुप में सब लाइव मैच दिखाए जाते हैं। ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। ग्रुप को ज्वाइन करें और लाइव मैच देखते रहें। हमारे ग्रुप में तमाम लाइव मैच लाइव दिखाए जाते हैं। दोस्तों, लाइव मैच देखने के लिए कमेंट बॉक्स में मौजूद लिंक के जरिए ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप में तमाम लाइव मैच दिखाए जाते हैं। पेज को फॉलो करें और मैच देखते रहें। हमारे ग्रुप में सब लाइव मैच दिखाए जाते हैं। ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। ग्रुप को ज्वाइन करें और लाइव मैच देखते रहें। हमारे ग्रुप में तमाम लाइव मैच लाइव दिखाए जाते हैं। दोस्तों, लाइव मैच देखने के लिए कमेंट बॉक्स में मौजूद लिंक के जरिए ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप में तमाम लाइव मैच दिखाए जाते हैं। पेज को फॉलो करें और मैच देखते रहें। हमारे ग्रुप में सब लाइव मैच दिखाए जाते हैं। ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। ग्रुप को ज्वाइन करें और लाइव मैच देखते रहें। हमारे ग्रुप में तमाम लाइव मैच लाइव दिखाए जाते हैं। दोस्तों, लाइव मैच देखने के लिए कमेंट बॉक्स में मौजूद लिंक के जरिए ग्रुप को ज्वाइन करें। I'm also playing your own game. There is a bit of a lesson here for all. Barbara Azam, who, as we well know, is one of the best timers of a ball in the game, is finding his way. It's funny, he's tough. Yeah, he's trying to find his way in here today, but he's at least hanging in there. Whereas, Mohammed Harris, yes, anyone can say that's the way I play. Eventually, you have to think out what's the best way to play for each particular situation. Every wicket, of course, worth 50,000 rupees towards the flood relief efforts. Thanks to KFC for that. So 50,000 in the kitty just now, as regards this game tonight. Judging by the other night, should be quite a full kitty by the time it finished. को जरूर सब्सक्राइब करो यार। तमाम भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़। जो भाई न्यू वीडियो देख रहे हैं यार, उससे गुजारिश की जा रही, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़। Oh, that's pretty straight. That is very, very straight. Shah Masood just put his front leg across in front of the stumps. I don't think there's a lot of bounce in this. He's hoping it might be angled down leg side. My initial impression is that this is likely to be a fruitless review. तमाम भाइयों से गुजारिश है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे करो यार। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को यार लाइव दिखाता हूँ, प्लीज़। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। Keep rolling nice and slow. Roll back, please. Roll back one more time. Keep rolling. Ball very close to the bat. Confirm it from my right, please. Are you ready? Keep rolling. Keep rolling. Flat line. Satisfied. No bat involved. Ball back. You are ready, please. Bowling direction out. Pitching got shot off. Impact is line. Wicket hitting. Got on field umpire. Rashid, I stay with you in this year. I'll let you know when you're ready. Now you see me, you signal. Yeah, the original decision, a good one, confirmed by the TV review. So Rashid Riaz, spot on with his decision. Shah Masood, not so spot on with that front foot and the lack of bat involved. So 2 balls, no runs for Shah today. Pakistan had 2 down at 15.
is number 4 again. Now he's had a poor series today. Maybe this could be his night. At least he's off the mark first ball. The bowler for Pakistan here, 16 for 2, we're into 4th over, and very good delivery from David Pillay. Look at this, he was hitting leg top of leg stump, and again, and I think that's where his fault is as far as his technique concerned. Early on in his innings, his front foot go towards off stump, not all the way, just a little bit, and sometimes the ball nips back in. Well, that's the first. एक मिनट यार, तमाम भाई से गुजारिश है यार, वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। दूसरा रन जो दोस्तों यहाँ पे It made things look so easy. It's not an easy shot to play. That's pulled away very nicely indeed. The dive just enough to cut it off by Ben Duckett. तमाम भाई से गुजारिश है यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी।
लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। सब लोग लिंक पे क्लिक करें। लाइव मैच देखने के लिए कमेंट में रोल की फैसिलिटी है और पिन है। Ball keep strike. 5 overs done. 32 for 2.
dominating the roundabouts here outside the ground in Lahore. Slight issue with the traffic build-up, though. One or two of our commentators have only just made it in. At least that's their excuse for now, anyway. And Miss Hale, Wakar Yunus joined me in the commentary box, having had a rather stressful journey to get here. Do not remind us. That was horrendous, without any doubt. Finding the middle of the bat once again. A couple of shots in the previous over from David Willey. Absolutely sublime through the leg side. Wakar has just about managed to plug himself in. Wiped the sweat off his brow. You were stuck out there, weren't you? Here's the traffic. I know people blaming me that I was not stuck in there. Look at that. And they're still coming in the ground. They're all coming to the cricket. It's a good sign. Have to be quick. I think that was a chance. Opportunity for Sam Curran, I think. The money most of the time, yep, it would have been gone. That would have been a big disaster for Pakistan. They already lost 2 wickets in the power play, trying to build the partnership, and if this would have hit the stumps, would have been a big issue. Yeah, he's the only one who's timing the ball very nicely, Babar Azam. The batsmen have really struggled to deal with sluggish pitch. That was a bouncer. Yeah, what Pakistani batters they need to do, they should realize this is not the pitch to assert yourself. One thing you can do as a batter is do not allow the opposition bowlers to string few dot deliveries together. That will impede the progress of this innings. Just keep on working the ball into the gaps with occasional boundary. Get to a decent total. Like the other night. They'll have a chance to win the game. Well, I think it's a hard thing to do when you already lost 2 wickets in the power play. That's hit very nicely. Beautiful shot right in the middle of the 2 fielders. This will really make Heather feel pretty good. Yeah, Gleeson going for the short ball point. Started not played it particularly well over the course of the series so far. Here he slams that back of a length and it barely gets up at all. Going to find on this particular surface that getting the ball fullish length, back of a length, maybe top of the stump's height, it's going to be difficult to hit, but the ball's going to sit up if you're short. Just like that. No, Alindar, we might have to get a sub on. He's only young, isn't he? What happened to his reflexes? I don't think he was expecting the ball to come to him. A little snoozing, I guess. It was hit hard. It didn't really give him much time to react. Whoa! He thought he was coming straight at his face, and then sort of ball dipped and hit him with his leg. Lucky, very lucky. Yeah, good fleshy bit that, Alim. There you go, see, you bowl it back of a length and that's just gripped and nipped away, turned Bubba inside out, and that's the end of the over, 40 for 2. Power play's over, just watch the movement here. Ouch. Well, not only ouch, it's unplayable delivery, because especially a bowler like Gleeson who sort of looked to swing the ball in, and if it's hit the seam and straightens, and the batsman like Babar, if he has already committed to play on the onside, what are the chances? It's very difficult to handle this sort of delivery then. भाइयों, अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो मैंने लाइव ऐप की लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है।
तो जल्दी से लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें और देखें पूरा मैच बिल्कुल फ्री। तो भाइयों अभी डाउनलोड कर लें। Mohammad Haris looked good for first few deliveries and then he Paris and Shan Masood that's his old mistake when he plays around the ball and he plays a little across and that's what he needs to fix that. But yeah, Heather looked good. Heather has started feeling his himself in the middle. He feels that he belongs there. Yeah, he deserves a bit of water now. Alim Dar got hit on the leg, so the power play gone. 40 for 2. Yeah, I mean the 2 wickets down are not ideal, but it's better than losing 3 as England have done in the last 2 run chases. Barber is there. We've already made our minds up that there is a little bit happening off the seam here and the ball not perhaps coming onto the batters the batters would like. And so therefore it's about calibrating your batting effort, isn't it? At the moment run rate 6.6. भाइयों अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो मैंने लाइव ऐप की लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो जल्दी से लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें और देखें पूरा मैच बिल्कुल फ्री। तो भाई Again, that ball just sort of staying in the pitch a bit. It was well played in the end, I think, by Haider. Yeah, this is the period where the Pakistani batsmen have struggled from the 7th till the 14th over. In the recent past, they have found it quite difficult to get a move on, carry on with the momentum if they got one. And these 2 batsmen, they should be wary of the fact they have to do something different. Well, totally different tactics from the England bowlers. Previous game, they were coming with the pace and running in hard and bowling those short deliveries. And तमाम also, प्यारे भाइयों से गुजारिश है यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। मेरे जितने भी प्यारे भाई देख रहे हैं यार उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मुझे मैसेज करे भाई मैंने कर दिया। प्लीज़ भाइयों सब भाइयों से रिक्वेस्ट है यार, मेरे तमाम भाइयों से प्यारे भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि यार मैसेज करके कह दे कि भाई मैंने आपका कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब। प्लीज़ आप लोगों को मैं लाइव दिखा रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार। bowled around 130 or less even sometimes. बताना है कि आपने he किया bowled है his कि नहीं। slower one really well and the odd bouncer. Previous game he felt that there was a bit more bounce in the pitch and he used it beautifully. ओके भाईजान बहुत मेहरबानी कर दिया तो। It's too short, not quick enough to bowl that length on this deck, Sam Curran, and that's been punished. यार अपने दोस्तों को भी लिंक सेंड करो कि वो भी मैच देख ले यार, लाइव मैच। Excellent footwork from अपने दोस्तों को भी सेंड करो वो भी मैच लाइव देख ले। Decipher how to deal with that angle, moved outside the. ओहो यार ये मसला बहुत आता है ना यार जो। एक मिनट गाइस यार ये मसला आ गया नेटवर्क।
ऊंचा खेल दिया है हैदर अली ने 6 रन के लिए। मैं कह रहा हूं जब 57 पर 2 खिलाड़ी आउट, 58 पर बाबर आजम, और ये वो शॉट थी जिस पर हैदर अली ने खूबसूरत छक्का लगाया आदिल रशीद को। अगर हैदर अली मुसलसल स्कोर करते हैं, राशिद ये ऐसे बैटर हैं, आपको लंबा खिलाएंगे, ये बहुत लंबा खेलने वाले हैं ये लोग। 58 पर 2, 8वें ओवर का खेल मुकम्मल। हैदर अली 12 वाले 17 रन, बाबर आजम 33 रन पर खेल रहे हैं। हसन मेहदी, इस्लाम, अली असगर, जैड खान, मरी से फाहिम सत्ती, हक नवाज, सफदर हुसैन और मुजम्मिल अब्बास। That was a big towers for Pakistan, even with a little bit of success in the power play. Short ball again surprises Hyder Ali. Caught him on the glove from Sam Curran. Well, this proves Amir's point, committing on the front foot. When you committed, you don't really check the pace of the ball, and sometimes it hurries on to you, and I think that's what happened here. To Heather had no clue. This came very, very quickly. Down the ground, there's a bit of a chase on. Alex Hales tidies up. Pakistan. यार जो मैच दिखाते हैं ये इन लोगों की खच नहीं खत्म होती। मैच दिखाने आ गए और जवान भाई पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है, तो यार मुझे नहीं पता ये कौन है और कहाँ से है। जवान भाई का मैसेज आ रहा है। That was a big towers for Pakistan, even with a little bit of success in the power play. Short ball again surprises Hyder Ali. Caught him on the glove from Sam Curran. Well, this proves Amir's point, committing on the front foot. When you committed, you don't really check the pace of the ball, and sometimes it hurries on to you, and I think that's what happened here. To Heather had no clue. This came very, very quickly. अब ये हुई ना कम में मोर से ज्यादा फायदे की बात। बैंक इस्लामी वन टच बैंकिंग से करें ट्रांजैक्शंस अपने थंब इम्प्रेशन से, वो भी बिना एटीएम कार्ड और चेकबुक के। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे।
Breakthrough for Sam Curran. Hot work out there. Humidity goes up a notch or two when the sun goes down here in Lahore. Well, really good delivery. Oliver played it well. Gets off strike. Well, Heather really looked good for his for the runs he's got, but really made that false shot, and that brings Iftikhar Ahmed on the crease. Plenty of overs to go. He can take a little bit of time. We all know that he can hit those big boundary balls, but he's got to stay out there. We need another partnership to build now. There was a decent partnership, but not enough. Now, good. That's a really good over from Sam Curran. Just the 5 runs from it and the wicket of Haider, 63 for 3. French perfume sprays. No gas. Last 3 times longer. M&U by Golden Pearl. मोबाइल लोड में 100% कैशबैक। इजी पैसा ऐप में साइन अप करो, 80 रुपए का मोबाइल लोड करो और पाओ 80 रुपए का कैशबैक। इंस्टॉल इजी पैसा नाउ। Can they make it third time lucky in the run chase? They need to, otherwise the series is done and dusted. If you're just joining us back there in the UK, about 3:15 in the afternoon, 2 changes for England. What's your gut feeling, Butch? Well, it's going all right at the moment, I guess. But England will have to chase runs a lot better than they've done in the last 2 games, no matter what Pakistan get. So those changes then, Wood and Wokes out, Topley and Gleeson in, so Wood and Wokes rotated after the first of 3 matches here in Lahore. And then Kahani is in for Harris Ralph. That might make things a little easier for England at the back end, because Harris Ralph is being rested, and the gargantuan run scoring Mohammad Rizwan is also having the game off. Well, can I ask you a question? You can. Don't you think there is a case of England having a batsman like Rizwan could actually display softer skills rather than going after the bowlers, looking for big strokes? You know, softer skills are required. There's plenty of room in this format for me. No, I think you're right. I mean, I have no problem with England trying to go after the bowling from ball 1. I have no issue with that at all. I just think that if in doing so, particularly if you're chasing a lowish total, you happen to lose 2 wickets early, then maybe you just rein it in a bit. You don't want to be losing 3 and 4, do you? Because that makes it very difficult. Think about the way they chased down the first total in the first match, actually. Alex Hales made 50, and they got there with 3 balls to spare. You know, you're going to win more often than you lose if you do it that way round. You're also going to win more often than you lose with those icy cold drinks if you get your Sensodyne on that toothbrush. Life is way too short. Somebody also need a haircut, isn't it? For sure, for sure. But I'm not sure that's what we're advertising. Oh, he's found the gap. That's really good. So it doesn't matter whether you're a pace bowler or a spinner, you do. Bowling long hops on this surface. That ball just sat up and squealed, spanked me for 4. Well, this one wasn't really that short. Iftikhar rocked back very quickly, read the length very nicely, and picked up the gap beautifully. This came out of the middle of the bat and just raced to the boundary. Yeah, the reason why he was able to place that ball, he pulled that ball with a vertical bat swing. Didn't try and flat bat it. And that's a good delivery from Adil Rashid.
But let me add on a little bit to the point, how to bat on these sort of pitches. If it's a flat pitch, I still say the way England goes in the first 6 overs is the right way to go. But if the pitches are slow like these ones, I think it can take a little bit of a time. So that's the end of the over, and we are out of here. It's 70-3. And also drinks. यार तमाम भाइयों से गुजारिश है यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। अभी तक तो यार किसी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार। प्लीज़ तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 29 तो चलिए देखते हैं 5000 डिजिटल स्टार्स कौन पूरा करवाता है। कौन है वो ऐसे इंसान जो लकी है हमारे लिए। देखते हैं कौन है वो। बस 75 स्टार की दूरी पे देखना पड़ेगा कौन है आज। अली शाह अहमद बने हैं लकी। बहुत बहुत शुक्रिया अली शाह, अल्लाह आपको खुश रखे। 5000 डिजिटल स्टार्स पूरे हो चुके हैं और ये बाबर रजा लाहौर से एक तो यार इन लोगों ने ना जो लाइव कर लेते हैं और बाद में इन लोगों का जो मसला बनता है ना, बड़े आए फेसबुक पे लाइव करते हैं, चलाना इन लोगों को आता नहीं और लाइव करने टूर पड़ते हैं। हद हो गई यार इन लोगों की। और देख ले इधर यूट्यूब पे कोई लाइव कर रहा होगा तो ठीक है, एक बंदा कर तो रहा है। मजा आता है के बाद जब आता है क्लियर करे स्प्राइट की Score back-to-back 50s this cricket season. 50 rupees voucher on app sign up. 50 rupees cashback on 100 rupees self-load. Install Easy Paisa app now. New Nescafe Classic. Ambition का गियर लगा। तमाम भाई से गुजारिश है यार, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। अभी तक तो किसी ने नहीं किया यार। जब नेस्कैफे मिले 15 रुपए। तमाम भाई से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग कर जाता और अम्मी को दिखाता खाली यार 225 है यार, 227 करवा दो यार। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 08100 क्लब मेंबर्स घर बैठे पूरे पॉइंट्स हासिल करें। मैं यार इतनी मुश्किल से लाइव दिखाता हूँ आप भाइयों को यार, आप मर्जी आप लोगों। Young chicken spread. Full nutrition, full of taste. मेरी हर सुबह होती है खुशियों के साथ, क्योंकि मेरे पास है चॉकोब्लिस की स्माइल. Spread and share the chocolatey pleasures of chocolate. Spreading smiles.
Let's get digital with Zong 4G. पाकिस्तान का डिजिटल नेटवर्क Zong 4G. इसी से तो लाइफ में मजा आता है। के बाद जब पर ऐसा ही है, डोमिनोज के सब पिज्जास बनते हैं with freshly made dough. Pizzas are made with hand-baked Californian Roma tomatoes and 100% authentic mozzarella cheese. Domino's, the pizza delivery experts. Score back-to-back 50. समाप्त हो चुका और 10 ओवर में एटलीस्ट आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है स्कोर आपको बैट्समैन एंड ऑफ स्पिनर ब्रेक बॉलर फिर से मौका दिया गेंद स्किन को फ्लिक करते हुए मिड विकेट के में खेलते हुए एक रन को पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की के साथ अब और पूरे पॉइंट्स हासिल करें। सेफ एंड हेल्दी चिकन डिलीवर। यार ये लाइव कर रहा है तो आ ही नहीं रहा इधर। ये सब ड्रामेबाजी इन लोगों की और कुछ भी नहीं। पता नहीं यार ये समझ नहीं आती, समझ से बाहर है। मैच दिखाओ आप भला, लाइव मैच दिखाते हैं। लिंक पे क्लिक करें। चलो ये लिंक वाला तो तंग ही करी पड़े हैं, आज कर ही लेते हैं। ये भी खुश हो जाएंगे गरीब लोग भी। लिंक लगाइए इन लोगों ने यार। तो कोई प्रोफाइल खोलो, लिंक अजाब है यार इन लोगों से बात करना। तो मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ लाइव, वरना मैं ये ऐसे काम नहीं करता है। ये लिंक पर दिखाओ तो ये करो तो ये करो, बस अपना ऐप इन लोगों ने मशहूर करना है। अब देखते हैं, बोलता है लिंक पे क्लिक करो। सब लोग लिंक पे क्लिक। अच्छा ये लिंक पे क्लिक करो। लिंक पहले कमेंट में वही मसला है ना, लिंक वाला मसला इन लोगों का हल ही नहीं होगा। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पहले कमेंट में पिन है। ये तो बंदे बस अजीब हैं, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे। ओए मसला है यार। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके लाइव मैच देखें। थोड़े मैच लिंक पिन आज के मैच का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन है। अभी पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके लाइव मैच देखें। टुडे मैच लिंक पिन इन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। प्लीज क्लिक ऑन लिंक एंड वॉच एचडी मैच ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। आज के मैच का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन है। अभी पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके लाइव मैच देखें। टुडे मैच लिंक पिन इन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। प्लीज क्लिक ऑन लिंक एंड वॉच एचडी मैच ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। आज के मैच का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन है। अभी पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक क्लिक करके लाइव मैच देखें। टुडे मैच लिंक पिन इन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। प्लीज क्लिक ऑन लिंक एंड वॉच एचडी मैच ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। आज के मैच का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन है। अभी पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके लाइव मैच देखें। टुडे मैच लिंक पिन इन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। प्लीज क्लिक ऑन लिंक एंड वॉच एचडी मैच ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। आज के मैच का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन है। अभी पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके लाइव मैच देखें। टुडे मैच लिंक पिन इन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। प्लीज क्लिक ऑन लिंक एंड वॉच एचडी मैच ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। आज बहनचोद है सब, ये सब लोग बहनचोद है। लिंक पर क्लिक करके लाइव runs, 2 balls to go off his third over. He was lucky there, Babar, very lucky in fact. I'll just come back to your question. You're damned if you do, damned if you don't. So that middle order is short on confidence because they've made no runs. लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। अरे अल्लाह यार ये दूसरा भूतने लग गया।
सब यार लोग लिंक इसलिए पे मैं लाइव क्लिक मैच करें, नहीं नहीं तो दिखाता यार। स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। लाइव मैच देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक ये पहले जो बकवास अपनी माने लग जाते हैं ना बीच में, ये दिल तोड़ देते हैं बंदों का यार। So that middle order is short on confidence because they've made no runs. They've made no runs because they're not at the crease long enough. They're then told, well, you've still got to keep the pace going, so you play a shot, you'll advise you get out, no runs again. So you still don't have confidence. So it doesn't take, it's worth spending, I think, even in the context of this T20, enough time just to start to rebuild that confidence. We pick up 120 over 10 of the 12th. Pakistan 89 for 3. Now shop, dine and travel with the convenience and luxury of Bank Islami debit MasterCards. Bank Islami, serving you the right way. Another good partnership here. Pakistan lost a few early wickets, 27 of 21 between Babar and Iftikhar. Gleason back into the attack. Picked up Haris. Mohammad Haris making his debut tonight, not getting too many. It's wide, hasn't put it away. Lots to look forward to as the foreign players arrive for the Pakistan Junior League all over the world. Brilliant opportunity, will be a brilliant platform to see talent from all over the world. Starts on October 6th as we all look forward to this. It's a huge deal for these youngsters, especially at this age. Travel to a different country, get to know a different culture, and most importantly, play on different pitches altogether. Short delivery, nicely played into the gap, and this will to the boundary. Another boundary for Babar Azam. He's on 46 now. He's playing on a different surface and he's playing a different game. It's the class of the man. He hasn't tried to force the issue all night. He's used the pace to perfection and he's timed all his shots. And on top of that, he's probably best in the business to pick out gaps. Once again, putting it away. Fine style. Yeah, it's just a gentle paddle, isn't it? Back to the question where we discussed the middle order, and David, you mentioned obviously just do them either way, this or that, but this series, perfect platform set up in that way leading into the World Cup. They've got another series before that where they can actually spend some time, because batsmen to come, Asif, Nawaz and Shadab, and all of them haven't spent as much time in the middle. Asif had the chance of the day in the previous game. He was out, I think in 12th over he came out to bat, or maybe 11th, and then got himself out against one of the best bowlers. And that's again learning curve for Asif. He has been in Pakistan team for the last 3 to 4 years. That sometimes you might have to bat for 12 overs, not just 3 overs or 4 overs. Short again, this time well in control, Iftikhar. Well. Indeed, it is a sensoline-free moment, isn't it? Sensitivity-free moment, because life is too short for sensitivity. You must have memorized this dialogue because you are their brand ambassador. Said it over 2,000 times already now. Once again, I think Pakistan have a perfect opportunity. Iftikhar in there as well. Yes, the middle
order has to impact the game. That they have to be aware of the situation and keep taking the scoreboard along. Projected score 9 in over would get them to what Babar thought at the toss would be a good score. The partnership looking good. Yolando 9 and 0 from here onwards will take them to 161. Still 7 wickets in hand after this 7 overs to go. Another brilliant shot, but straight to the fielder. 13 gone, 97 for 3. मोबाइल लोड पे 100% कैशबैक। इजी पैसा ऐप में साइन अप करो, 80 रुपए का मोबाइल लोड करो और पाओ 80 रुपए का कैशबैक। इंस्टॉल इजी पैसा नाउ। Adil Rashid to continue. Went for runs in the previous game. Short cutaway. Misfield yields one. Wet, soggy conditions in the previous game. The ball was getting wet. The Pakistan spinners bowled in particular excellent. 10 overs between them, giving away 50. Adil Rashid, I thought, found it a little bit difficult to control the wet ball. It was obviously dry by the time Pakistan's spinners got their hands on it. I just... my tease. They're playing it well, the Pakistani batters against Rashid. He's conceded 29 runs against short sweep, against the spin, into the night. Another 6. Those tossed up there was there to be hit. That massive hit brings up Pakistan's 105 now, and Iftikhar looking good in the middle. Adil Rashid has given this some air. Got the front leg out and given a mighty heave. Big hit from his... Yeah, beautifully struck. And I would suggest it's the value of spending time with the crease because he's now set, seeing it well. That's what happens if you spend 20-30 minutes in the crease. You see it better and you take these opportunities. But that went a long, long way. 106 meters. That's, I think, the longest in this series, if I'm not wrong. 6 metres, that's a reasonably sized driveway. Yeah, this is beautiful. But you saw it and heard it leave the bat, even though this is a huge stadium. Stands are a long way back from the edge of the field, from the boundary itself. You thought, oh, that could be on the roof. He's almost going to get it over, Rashid. That single. With that, Babar Azam brings up his 27th T20 I-50, 4th against England, second score of 50 plus in this series. In the class act, and he's got all that class tonight. Yeah, he's kept his head when some around him have lost theirs. Not all yet. It needed someone, Pakistan needed someone to understand the pace of this pitch, to understand how to get runs on this pitch, and to try and set the example. So even though the strike rate is not what you might say Bonza T20, 121 on this pitch tonight is fine. Single to finish off the 14, Pakistan 108 for 3. बैंक इस्लामी वन टच बैंकिंग से करें ट्रांजैक्शंस अपने थंब इम्प्रेशन से, वो भी बिना एटीएम कार्ड और चेकबुक के। बैंक इस्लामी सर्विंग यू द राइट वे। यार अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दो यार, वो भी पाकिस्तान का लाइन है देख लो। बहुत मेहरबानी होगी यार, आप अपने दोस्तों को भी लिंक सेंड करें ना, अपने दोस्तों को भी लिंक सेंड करें। मैं आप लोगों को पूरा मैच लाइव दिखाऊंगा। तमाम भाइयों से गुजारिश है अपने दोस्तों को भी लिंक सेंड करें। Such
a key man in this England white ball side, but nothing's going to worry him yet. इशफाक शफी ने 75 स्टार भेजे हैं। 500 की दूरी है, जल्दी जल्दी से इस ओवर में पूरे करवा दीजिए। यॉर्कर गेंद, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त गेंद थी। खालिद में अब्बास, फराजुल्लाह खान, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। 200 की दूरी, कौन होगा ऐसा बंदा जो 10,000 डिजिटल स्टार्स आज पूरे करवाएगा। 9,800, और चाहूंगा मैं कि कम से कम शाह फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसानी, देखते हैं कि आखिरी वीवर कौन होगा। 9,900, 100 डिजिटल स्टार्स दूर है। देखते हैं कि वो कौन बंदा है जो पूरे 10,000 डिजिटल स्टार्स पूरे करवाता है। 100 डिजिटल स्टार्स भेज सकते हैं जल्दी जल्दी से, कौन होगा वो लकी बंदा, उनका नाम हम जरूर लेंगे। तो मैच की तरफ जाते हैं। तो इस बीच खेलने की कोशिश, यकीनी तौर पर छक्के के लिए जाना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त पे अपना शॉट चेक किया। आसिम गेमिंग, चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। 25 स्टार्स दूर है आसिम गेमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। चलिए बिलाल अब्बासी, गाजी अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अल्लाह आपको खुश रखे। 10,000 आपने पूरे करवा दिए बिलाल अब्बासी, बिलाल अब्बासी बहुत बहुत शुक्रिया। 100 डिजिटल स्टार्स बिलाल। मोहम्मद फहीम ब्लाउज, बहुत बहुत शुक्रिया 75 स्टार्स के लिए। 10,000 डिजिटल स्टार्स पूरे हो चुके हैं, और यकीनी तौर पर मैं चाहूंगा कि कम से कम 20,000 फॉलोअर्स पहली इनिंग से मिल जाने चाहिए। और बाबर आजम ने हवाई गेंद खेला और फील्डर पीछे है, तो सॉरी इफ्तिकार ने। तो चलिए पाकिस्तान को लगता हुआ चौथा झटका। तो इफ्तिकार सैम करन की गेंद पे आउट हुए हैं, और पाकिस्तान को यकीनी तौर पर लगा चौथा झटका 110 रन के स्कोर पे। अब्दुल्ला जलीस, बहुत बहुत शुक्रिया इन डिजिटल स्टार्स के लिए। और एड के दौरान आपको स्क्रीन नहीं दिखती है, ये आप सबको पता है। जो मेरे चैनल पे जो नए हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ब्रेक के दौरान मैं आपको मैच नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैच में अल्लाह यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई फ्रॉम बडगाम, अल्लाह खुश रखे यूसुफ भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एड के दौरान आपको पता ही है कि एड के दौरान मैं मैच आपको लाइव नहीं दिखा सकता, क्योंकि स्पीच पे स्ट्राइक आ जाती है और मैं नहीं चाहता कि आप मैच से महरूम हो जाए। तो चलिए आसिफ अली है जो सामना करेंगे। मजहर हुसैन 75 स्टार्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। यूसुफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रियाज अहमद, वालेकुम सलाम। अफजल गुरु, वालेकुम सलाम। मोहम्मद याकूब, वालेकुम सलाम। सैम अदनान, खत्म चाचा, बिल्कुल। गवर खान जा सकते हैं, आपको इशू नहीं। मुदस्सिर रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जब तक मैच शुरू होता है तब तक आपको स्क्रीन पे ऐसे ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि पेज पे स्ट्राइक आती है। अमीश राजा, अमीश पेज बंद हो सकता है। वसीम राजा टंगमर्ग से, टंगमर्ग राजा, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। खलील, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स किंग, सलाम ब्रो, वालेकुम सलाम। तो जैसे ही मैच फिर से शुरू होता है मैं आपको बिल्कुल मैच की तरफ ले चलूंगा, तो बने रहिएगा। मैं कश्मीर से हूँ, दिलशादा मैं कश्मीर से हूँ। यासिन जान, वालेकुम सलाम। चाचा गया, बिल्कुल। सजाद हुसैन। तो चलिए एक बार फिर से मैच की तरफ चलते हैं। तो आसिफ अली, काफी नर्वस स्टार्ट आसिफ अली की, यकीनी तौर पर ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन खेल नहीं पाए। मोहम्मद आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया इन डिजिटल स्टार्स के लिए, इस प्यार के लिए, अल्लाह खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। तो 11,000 डिजिटल स्टार्स पूरे करवा दे, 10,525 हो चुके हैं। तो चाहूंगा मैं जल्दी जल्दी से 11,000 और 20,000 फॉलोअर्स। फॉलो करने में कोई पैसा नहीं लगता और लाइक करने में कोई पैसा नहीं मिलता। चलिए ऑन साइड में खेला है आसिफ अली ने, और क्या जबरदस्त फील्डिंग की है। यकीनी तौर पर सोच रहे थे कि चौका मिलेगा। खुलता हुआ 2 रन पे खेल रहे हैं आसिफ अली। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। आज अच्छा स्कोर है 15, तो यकीनी तौर पर 170 तक, लेकिन और जब तक आसिफ अली और बाबर आजम है तो उम्मीदें भी हमारी बनी है। महद अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, थैंक्स फॉर लाइव ब्रॉडकास्टिंग मैच, अल्लाह खुश रखे आपको। फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस का अच्छा लाभ नहीं उठा पाए। 1 रन के लिए खेला।
मिड ऑफ की जानिब। तो इसके साथ 15 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 113 रन है 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। मेरे आरिफ भाई जुड़े हैं, मेरे कजन हैं चचेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। भाई मेरी टाटा स्काई को रिचार्ज करो मोहम्मद यासीन भट्ट। चलिए कोशिश करते हैं आपकी टाटा स्काई को रिचार्ज करने की। अगर आपकी टाटा स्काई रिचार्ज हो गया तो फिर यहाँ मैच कौन देखिएगा। कैसर अब्बास सलाम जी, वालेकुम सलाम, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस आसिफ अली, बहुत बहुत शुक्रिया। हमीद सोहेल बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए। तो 400 डिजिटल स्टार्स कम है, चाहूंगा मैं कि ब्रेक जब तक खत्म होती है। तो चलिए ब्रेक खत्म हो गई और 400 डिजिटल स्टार्स भेज के पूरे शाहिद खान बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिजिटल स्टार्स के लिए, अल्लाह खुश रखे। ब्रेक के दौरान आपको बस मैच जो है और स्क्रीन जो है ब्लैंक दिखती है। परवेज अफजल डार वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसिफ अली ने खेला है, पीछे फील्डर है लेकिन मिलता हुआ चौका, बिल्कुल फील्डिंग चेंज की थी, दूर था खिलाड़ी, तो एक और चौका मिलता हुआ आसिफ अली को, 6 रन पे पहुंचे। इजाज मराठ बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए, वालेकुम सलाम। सरताज शाह वालेकुम सलाम। फैसल मीर नाम लो भाई, अल्लाह खुश रखे फैसल भाई, फैसल मीर साहब। बिलाल भट्ट कश्मीरी में कमेंट्री करो, मैं जरूर कश्मीरी में कमेंट्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग जो है, मेरे बहुत सारे अजीज दोस्त जो है सऊदी से जुड़ते हैं, जिनके लिए मैं खास ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। पेज को बड़ा रिस्क में डाला है, यकीनी तौर पर आप उस चीज को समझ भी सकते हैं और जो आप ताउन दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 49,000 लोग मैच अभी देख रहे हैं, तो मैं यकीनी तौर पर चाहूंगा कि ये कम से कम 50,000 के पास तो हो जाए। जी हाँ 50,000 हो गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर डार डिजिटल स्टार्स के लिए। और एक बार चलिए थर्ड मैन की जानिब कट किया गेंद को, 1 रन आसिफ अली के खाते में मिलता हुआ 118, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। आज बेहतरी है पाकिस्तान की बल्लेबाजी में, आज रिजवान भी नहीं है और आज हारिस रूफ भी नहीं है, तो बॉलिंग का जो मोर्चा है आज संभालना पड़ेगा शादाब और नवाज खान को। शाहिद नजीर बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए। तो कौन है वो लकी जो 100 डिजिटल स्टार्स भेज के 11,000 पूरे करवा देगा, उनका नाम मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। मीर हसन हुसैन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। तो देखते हैं कि कौन है वो बंदा जो 100 डिजिटल पूरे 100 भेज के 11,000 डिजिटल स्टार्स पूरे करवा देगा। देखते हैं, बने रहिएगा। इस बीच बाबर आजम ने क्या उम्दा शॉट खेला है और मिलता हुआ छक्का। तो यकीनी तौर पर इस छक्के के साथ चाहूंगा मैं कि कौन है वो लकी बंदा जो डिजिटल स्टार्स भेज के पूरे 11,000 करवाएगा और पूरे 100 डिजिटल स्टार्स भेज के इज्जत दे सकता है। तो चलिए छक्का मिलता हुआ बाबर आजम को, क्या खूबसूरत शॉट खेला ग्लेसन की गेंद पे। और मैं इंतजार में हूँ कौन है वो बंदा। मुस्लिम हाउथ 75 स्टार्स, 25 स्टार दूर है, तो मुस्लिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने 75 स्टार भेजे तो 25 दूर रह गए हम 11,000 डिजिटल स्टार से। इस बीच खेला 1 रन के लिए स्लिप की जानिब, तो परे राहिल ने पूरा करवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया परे राहिल आपका, अल्लाह खुश रखे आपको, बहुत बहुत शुक्रिया परे राहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे। मोहम्मद दाऊद बहुत बहुत शुक्रिया आपका 11,000 डिजिटल स्टार्स भेजने के लिए, बहुत बहुत भाई। डिजिटल क्या है, ये डिजिटल स्टार्स होता है, प्यार और रेस्पेक्ट दे सकते हैं और चैनल को प्रमोट कर सकते हैं आप जब आप डिजिटल स्टार्स भेजते हैं। तो आज काफी दिनों बाद बाबर आजम जो है एक कप्तानी इनिंग्स खेल रहे हैं, यकीनी तौर पर डीप मिड विकेट की जानिब खेला 1 रन, और इस 1 रन के साथ 126 आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। नबी पख्तून बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए। शेख मोहित बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। तो चलिए जो लोग प्यार दे सकते हैं वो दे सकते हैं डिजिटल स्टार्स के थ्रू, कोई टारगेट नहीं है, अब टारगेट पूरे हो चुके हैं। तो यकीनी तौर पर पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, पैसे नहीं लगते फॉलो शेयर में। अली गवार बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए, अल्लाह खुश रखे। 64,000 लोग देख रहे हैं, 65,000। चलिए क्या बात है, पूरे रिकॉर्ड तो आज बन चुके हैं हमारे नाम। $66,000, क्या बात है। माफ कीजिएगा ऐड के दौरान
अभी स्ट्राइक आ सकती है, तो भूल चुका था मैं, कमेंट्स की तरफ जा रहा था मैं। जमीर खान बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए, अल्लाह खुश रखे। तो पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। दूसरी इनिंग्स में रहमानुल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक फैसल बहुत बहुत शुक्रिया, आशुमीर बहुत बहुत शुक्रिया, डिजिटल स्टार्स भेज रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। आशुमीर बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेज को जरूर फॉलो और लाइक कीजिएगा। दूसरी इनिंग्स में भी आपको जुड़ना है, पूरा मेरा साथ देना है, और आप और मैं मिलकर एंजॉय करेंगे। हिलाल भट्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनी तौर पर 171 का हदफ पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आज हारिस रूफ भी है नहीं है। हिलाल भट्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रिंस तफूर हुसैन राजपूत बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए। जानजीब बहुत बहुत शुक्रिया। बट साकिब जट बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए। इस बीच खेला है बाबर आजम ने, और यकीनी तौर पर लेकिन क्या फील्डिंग की है। चलिए चेक करना पड़ेगा थर्ड अंपायर को। एक अच्छा शॉट खेला था, 2 रन तो मिले हैं, तो बाबर आजम भी कह रहे हैं उनको, अंपायर को कुछ कह रहे हैं। सालिक बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए। फरा आदिल बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स। शबीरुल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इन डिजिटल स्टार्स के लिए। और बहुत सारे डिजिटल स्टार्स आए हैं, तो कोई कमेंट अगर मुझसे स्किप भी हो जाता है माफ कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे थर्ड अंपायर चेक करेंगे कि ये चौका है या रोकने में कामयाब हुए हैं। जी हाँ, रोकने में तो कामयाब हुए हैं, ऐसा ही लग रहा है। राही खुर्शीद अहमद बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर शेर आफरीदी नाइस लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे सबको। जो ना खुश है अल्लाह उनको भी खुश रखे। इस बीच फुल टॉस गेंद, और क्या शॉट खेला है, उम्दा शॉट, जारियाना छक्का लगता हुआ बाबर आजम के खाते में एक और छक्का जुड़ता हुआ पाकिस्तान को यकीनी तौर पर मजबूत पोजीशन में लेता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सबका जुड़ने के लिए, इस प्यार के लिए। और क्या उम्दा शॉट खेले हैं। देखिए फुल टॉस मिली थी और फुल टॉस को पूरी तरह से यूटिलाइज किया, और क्या शानदार छक्का आता हुआ बाबर आजम के बल्ले से। यकीनी तौर पर आज बाबर आजम पुराने फॉर्म में लग रहे हैं, पुराने मूड में लग रहे हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे ये चाहूंगा कि बाबर आजम और आसिफ अली ही अंत तक खेलें, पूरे 20 ओवर तक खेलें, तो यकीनी तौर पर 170-180 के आसपास स्कोर हो जाएगा। अब्दुल मजीद बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए। 70 के हो चुका है, इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्या बात है, 71,000 हो चुका है। 71 पॉइंट कुछ के अभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो मैच देख रहे हैं। 71,000 71.3। इस बीच निकल कर खेलना चाहते थे, 1 रन मिलेगा जरूर बाबर आजम को। 68 रन पे खेल रहे हैं बाबर आजम, काफी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं। 48 गेंदों में 68 रन बनाए हैं। अगर कोई कमेंट मुझसे मिस हो रहा है तो उसके लिए माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी प्यार दिया, डिजिटल स्टार्स भेजे, जिन्होंने नहीं भेजे, जिन्होंने चैनल को फॉलो किया, लाइक किया, उनको लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी इनिंग्स में जुड़िएगा जरूर, आप और मैं एंजॉय कर सकते हैं। 73 के। चलिए शॉर्ट पिच गेंद, आसिफ अली ने छोड़ दिया इस गेंद को, कोई छेड़खानी नहीं की। तो आसिफ अली से भी चाहेंगे कि जल्द से जो है आखिरी 3 ओवर्स में कम से कम 25-30 रन बनाकर पाकिस्तान को एक एडवांटेज दे सकते हैं। कैमरा को सेट करो। मैंने पूरा कोशिश की है जहां तक मुझे लगता। हमाद खान बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाम ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वकार चौहान अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। समीर अहमद फतेहपुरा से बहुत बहुत शुक्रिया। वाचिंग फ्रॉम कश्मीर इंडिया डारू, मैं भी कश्मीर से हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मारना चाहते थे इस गेंद पे, एक बार फिर से बीट हुए आसिफ अली, यकीनी तौर पर छक्के मारने की कोशिश में थे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कहां तक आपको महफूज स्कोर लग रहा है और कहां तक पाकिस्तान टारगेट दे पाएगी, कौन सा हदफ देना चाहेगी पाकिस्तान। 77.3 के। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। यहाँ से
मोबाइल की बैटरी भी थोड़ी लो हो चुकी है। यकीन होगा कि आप लोग जुड़ेंगे एक बार फिर से। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की डेविड विली की। तो चलिए इस बीच खेला है, पीछे फील्डर है और चलिए हाथ में दी गई गेंद यकीन और आसिफ अली एक बार फिर से फ्लॉप हो चुके हैं और पाकिस्तान को लगता 5वां झटका लगता हुआ पाकिस्तान को। और आसिफ अली डेविड विली की गेंद स्लोवर वन और शॉर्ट पिच बॉल थी, रूम बनाने की कोशिश। यकीनी तौर पर इस गेंद पे आप छक्का नहीं मार सकते क्योंकि पेस नहीं थी उतनी और मंजर अब्बास 170 मुश्किल से वाचिंग फ्रॉम शुपियन अयान कश्मीरी भाई जो है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेज को जो है लाइक करेंगे और फॉलो करेंगे। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लाइक और फॉलो करने में कोई पैसा नहीं मिलता। तो चलिए जुड़े रहिएगा, जब तक ऐड खत्म होता है तब तक आपको स्क्रीन ऐसे देखने को मिलेगी। तो चाहूंगा मैं कि डिजिटल स्टार्स भेज सकते हैं, अभी भी मौका आपके पास 3 ओवर्स में डिजिटल स्टार्स भेज के हमें और भी सम्मानित कर सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं। और जितना भी प्यार दिया आप लोगों ने इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए नवाज आए हैं, मोहम्मद नवाज। स्क्रीन तो बिल्कुल ठीक चल रही है, मेरे से तो बिल्कुल स्क्रीन ठीक चल रही है क्योंकि मैं दूसरे फोन पे भी चेक कर रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि आप ठीक हुई होगी। डिजिटल स्टार्स भेजते रहिएगा और चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बस इस प्यार की जरूरत है, ये जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरबाज बहुत बहुत शुक्रिया, मुबशर बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए। इस बीच बाबर आजम निकल के खेलना चाहते थे लेकिन सीधे फील्डर के जो पीछे फील्डिंग कर रहे थे उनके हाथ में गेंद, तो कोई रन बनाने का मौका नहीं। तो देखिए आसिफ अली कैसे आउट हुए, यकीनी तौर पर चाहिए था अंत तक खेले, आखिर तक खेले। डेविड विली जिन्हें आसिफ अली की विकेट की टॉप गेंदबाजी कर रहे हैं। बाबर आजम पीछे जाके लग रहे तो 136 अभी भी स्कोर है। यहाँ से चाहेंगे कि कम से कम 30 से 35 रन जोड़ें जल्दी से। अभी भी 16 गेंदें बाकी हैं, तो मैं चाहूंगा इन 16 गेंदों में कम से कम 10,000 के आसपास फॉलोवर जुड़ने चाहिए जो पेज को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आगे भी मैच आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जरूर। चलिए इस बीच ऑन साइड में खेला 1 रन के लिए, पीछे फील्डर हैं, जी हाँ बिल्कुल, तो 1 रन मिलेगा बाबर आजम को। तो पाकिस्तान का स्कोर 137। तो यहाँ से मोमेंटम लूज नहीं करना है पाकिस्तान को। जी हाँ बिल्कुल, तो चलिए ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं स्क्रीन को। जी हाँ बताइएगा जरूर कमेंट्स में। इस बीच नवाज ने ऑन साइड में खेला, 2 रन की मांग है, देखते हैं नहीं, दौड़ के आए फील्डर और बस 1 रन बनाने का मौका था। 138 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। जो भी डिजिटल स्टार्स भेज रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा जिन्हें डिजिटल स्टार्स भेजे थे। कोशिश कर रहा हूं मैं ढूंढने की। हसन सैफी ने भेजे थे 99 डिजिटल स्टार्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 400 डिजिटल स्टार्स पूरे करने हैं 13 के डिजिटल स्टार्स के लिए, तो भेजिएगा जरूर।
इस बीच एक बार फिर से बाबर आजम ऑन साइड में खेलना चाहते थे, फिर से बीट हुए और पैड पे जाके गेंद लगी और 1 रन बनाने का मौका था। तो इस 1 रन के साथ 139, 5 विकेटों के नुकसान पे, जिससे हम आने वाले दिनों में जो है आपको पूरा अच्छा मैच दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना यकीन है कि आने वाले मैच भी जरूर आपको इसमें स्क्रीन इस पेज पे दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो यकीनी तौर पर पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूले, उसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका। नवाज ने एक बार फिर से ऑन साइड में खेला, 1 रन मिलेगा। तो चलिए 2 रन ले लिए, 141 18 ओवर के इख्तिताम के बाद। तो एड्स के दौरान मैं स्क्रीन पढ़ने की कोशिश करता हूं क्योंकि एड्स नहीं दिखा सकता आपको। अब एक ऑर्डर स्क्रीन रोटेट कर दे मंजूर मलिक। मंजूर भाई आप जा सकते हैं। विक्की खान बाबर, इंशाल्लाह 117 होगा। मोहम्मद रिजवान, चलिए ऐसी उम्मीदें डाल रहा था। वालेकुम सलाम सागर जान और 9 एस के मराफत अली, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज अहमद वानी लाख रुपए स्टार से। मोहम्मद कासिम मजारी कौन, देखिए मोहम्मद काशिफ, आपको पता ही है कि लाइव मैच करना कितना मुश्किल होता है। पेज पे स्ट्राइक आती है और ये मेरा पर्सनल पेज है, और जो इस पेज पे मैंने पूरे 3 साल से मेहनत की है और मैं नहीं चाहता कि ये पेज जो है ऐसे ही चला जाए। तो यकीनी तौर पर आप जब डिजिटल स्टार्स भेजते हैं, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और ज्यादा से ज्यादा काम करने का और लाइव मैच दिखाने का मौका मिलता है। तो जरूर अपना प्यार भेजिएगा। डिजिटल स्टार्स 300 कम है, 2 ओवर्स में चाहिए 300 डिजिटल स्टार्स, तब जाके 13,000 है। और उसके बाद आप नहीं भी भेज सकते हैं तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। 142 11 गेंदें अभी भी बाकी हैं, तो देखना पड़ेगा। जमील आजाद, ये डिजिटल स्टार्स नीचे हैं, आप चेक कर सकते हैं। जो स्टार का बटन है आप उसको क्लिक करके भेज सकते हैं। जो सूर्य में लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा भेजे हैं, और किसी भाई ने 99 स्टार भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। तो 120 डिजिटल स्टार्स दूर है। शेर बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिजिटल स्टार्स के लिए। तो अभी भी 170 डिजिटल 175 स्टार्स दूर हैं 13,000 डिजिटल स्टार्स से। तो जल्दी से भेजिए और दूसरी इनिंग्स में जरूर आपको मैच दिखाएंगे। इस बीच ऑन साइड में खेला है, फील्डर पीछे है लेकिन वो दर्शक बन के रहेंगे नहीं जी। देखिए क्या कमाल की फील्डिंग की है टॉपली ने। यकीनी तौर पर जमाल अहमद बहुत बहुत शुक्रिया 100 डिजिटल स्टार्स के लिए। रुबुल्ला मसूद बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इरफान बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए। तो यकीनी तौर पर टॉपली ने अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। देखिए क्या गजब की फील्डिंग की है, कमाल की फील्डिंग। या बिल्कुल सेफ दिख रहा है। RDX एजाज बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल स्टार्स के लिए एबी फैसल, चलिए आप लिख रहे हैं 300 स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया। शमरोज DPJ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखना पड़ेगा एक बार फिर से, थोड़ा अंपायर चेक करें। यकीनी तौर पर 2 रन बचा लिए हैं जहां तक ऐसा लग रहा है। जासिम बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रहीम बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक फरहीन रंगरेज बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब डार बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए, इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। दूसरी इनिंग्स भी मेरे साथ आपको जरूर देखनी पड़ेगी। इस बीच रिजवान नवाज ने एक बार फिर से खेला है, सामने फील्डर है, 1 रन बनाने का मौका। 143 रियाज बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल स्टार्स भेज के अपने प्यार दे रहे हैं। 75 स्टार्स भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको 500 स्टार। अली हैदर अंसारी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ऐसे कमेंट्स देख के भी अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लेकिन चैनल को फॉलो और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। यकीन है, मुझे उम्मीद है आप जरूर चैनल को फॉलो और लाइक करेंगे, दूसरी इनिंग्स भी देखेंगे और आने वाले वक्त में जो भी मेरा कंटेंट अपलोड होगा जरूर आप उसको शेयर कीजिएगा। चलिए बाबर आजम ने इस बीच खेला है, क्या खूबसूरत शॉट खेला ऑन साइड में। काफी देर से इस शॉट की ट्राई कर रहे थे और यकीनी तौर पर आखिरकार कामयाब हो गए और चौका मिलता हुआ उनको। अयूब भट्ट बहुत बहुत शुक्रिया। अयूब भाई इस प्यार के लिए, डिजिटल स्टार्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अल्ताफ भाई, क्या भाई साहब क्या हाल है, अल्लाह का करम है। चलिए यकीनी तौर पर एक चौका मिलता हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है चाहिएगा 170 के आसपास स्कोर पहुंचा दे। एक वक्त पे लग रहा था कि शायद आसिफ अली जब थे कि 180 तक जाएगा, लेकिन आसिफ अली जल्दी आउट हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को फॉलो और लाइक जरूर करें। चैनल को फॉलो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपको एक बार फिर से मैच देखना है तो वो मैच आप तभी देख पाएंगे
जब आप चैनल को फॉलो करेंगे। फॉलो और लाइक करना ना भूलें। तो 19 ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी, 150 है स्कोर। तो देखते हैं कहां तक लेके जाएगी पाकिस्तान। लाइक और फॉलो करना ना भूलें। याद रखें जरूर कि मेरा नाम ले लो, मैं लगारी बलोच हूँ, नूरदीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू भाई डोरेमान, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर मोहम्मद अर्शद अली लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं कि 7 ओवर्स में पाकिस्तान 7 गेंदें, माफ कीजिएगा, कितना रन बनाते हैं। बलोच वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जय श्री राम चरण सिंह लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया चरण सिंह आपका जुड़ने के लिए। शॉर्ट पिच बॉल के साथ ओवर का इख्तिताम 150, 5 विकेटों के नुकसान पे, और 19 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। भाई तो गुजारिश है कि अगला मैच ब्रेक के साथ अपलोड करेंगे। और मैं चाहूंगा दरमियान से ब्रेक भी लेंगे और मैच का एज भी। मनन भाई ने भेजे हैं शोरजनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनन भाई डिजिटल स्टार्स के लिए। तो 14,000 डिजिटल स्टार्स, क्या बात है। यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी इज्जत दी। अल्लाह सबको खुश रखे। चैनल को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। दूसरी इनिंग्स भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और यकीन है क्योंकि उस वक्त मैं ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर नहीं करूंगा, तो यकीनी तौर पर आप खुद ही जुड़ जाएंगे, और ये तभी मुमकिन है जब आप चैनल को फॉलो और लाइक जरूर करेंगे। और जल्दी जल्दी से चैनल को लाइक कीजिएगा। और भी बहुत सारे डिजिटल स्टार्स आए हैं, शाहनवाज ने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई। और भी कोई भाई थे जिन्होंने डिजिटल स्टार्स भेजे। मोहम्मद आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्लिसन डालेंगे अगला ओवर। और चलिए, उम्दा शॉट खेले हैं, फील्डर पीछे गेंद के, लेकिन बॉल जीत गई और फील्डर हार गए, और बाबर आजम को मिलता हुआ एक और चौका। 154। सलीम पठान, बहुत बहुत शुक्रिया। करीमदीन बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स के लिए। रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर है, अताउल्ला यकीन से कह सकता हूँ, वो आगे बहुत अच्छा खेलते हैं। उनको पता है कि हमारा मिडल ऑर्डर कमजोर है, तो उसी हिसाब से खेलते हैं जिस हिसाब से वक्त डिमांड करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों का जुड़ने के लिए। 14,000 डिजिटल स्टार्स है, छोटी बात नहीं है। चलिए, एक बार फिर से बाबर आजम ने उठा के गेंद को मारा है, दूर जाके स्टेडियम में छक्का मिलता हुआ, और तमाशाई के हाथ से क्या छूटता हुआ। तो यकीनी तौर पर 160, 5 विकेटों के नुकसान पे 10 रन यकीनी तौर पर बनाना चाहेंगे बाबर आजम इन 4 गेंदों में, एक अच्छे स्कोर की जानिब। 4 गेंदें अभी भी मुंह बाकी हैं, तो इन 4 तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा खामोश रहूं। बहुत थक गया मैं कमेंट्री करते करते। जाते जाते इतना जरूर बताऊंगा कि चैनल को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि दूसरी इनिंग्स में भी आप जुड़िएगा। एक बार फिर से गेंद हवा में है, 2 फील्डर पीछे हैं, लेकिन और 2 रन मिले बाबर आजम को। गेंदों पे कम से कम 700 डिजिटल स्टार्स भेज के और इज्जत और प्यार दे सकते हैं। तो जल्दी उठाइए फोन और डिजिटल स्टार भेजें, और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आज बाबर आजम समझ गया है कैसे खेलना है। बिल्कुल गुलनबी, बहुत बताओ भाई। इस चैनल पे जो चल रहा है एडवोकेट हिलाल अहमद व्लॉग्स पे, इस चैनल पे जब आप करें एडवोकेट हिलाल अहमद व्लॉग्स को सर्च कर सकते हैं आप, और फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इस बीच खेलना चाहते थे, गेंद जो है बल्ले पे लगी नहीं। 80.1 के लोग देख रहे हैं, तो आखिरी दो गेंदें हैं, 161 स्कोर। जी हाँ, 163 स्कोर। नासिर अमीर, बहुत शुक्रिया डिजिटल स्टार्स भेजने के लिए। 2 गेंदें बाकी है, और कम से कम 2 गेंदों में जल्दी जल्दी से भेजिए। इंतजार में हूँ, जल्दी जल्दी करें।
और जल्दी जल्दी से अपने पेड़ गौहर हमीद बहुत बहुत उम्दा शॉट खेला है जारियाना शॉट में एक और छक्का मिलता हुआ। शुक्रिया 169 में क्या था 170 तक लेके जाना चाहिए पाकिस्तान को। तो मोहम्मद फहीम बहुत बहुत शुक्रिया इन 100 डिजिटल स्टार्स के लिए। एक 169 पे सिमट गई है पूरी पाकिस्तान की। हम हो चुके हैं और 169 170 का टारगेट दिया है। मैं पहले से ही कह रहा था कि 170। तो यार इधर करते हैं लाइव को बंद। तो अगले मैच के अंदर हाजिर होंगे, ठीक है, दूसरी विनिंग के लिए आएंगे। तो चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं।